गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट्सएप जो है वो प्लान कर रहा है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 25.4 मिलियन डॉलर का फ़ाइन लगाया है उनके एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस पर, उसको वो कोर्ट में चैलेंज करे। तो इस जो है फ़ाइन को सीसीआई ने व्हाट्सएप पर इसलिए लगाया क्योंकि 2021 में उन्होंने एक प्राइवेसी पॉलिसी निकाली थी और यूज़र्स को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था कि वो उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप उन्हें वो सर्विस यूज़ नहीं करने देगा। ठीक है। तो इस पॉलिसी को कहा गया कि मेटा जो है वो अपनी ऐप्स को एडवर्टाइजिंग के लिए जो है यूज़र का डेटा यूज़ करना चाहता है, और प्राइवेसी से रिलेटेड जो है वो अपनी कंपटीशन का फ़ायदा, अपनी एंटी कॉम्पिटिटिव एक्शन से जो है वो प्राइवेसी को एक तरह से एंडेंजर कर रहा है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो एक स्टेचुटरी बॉडी है, 2009 में बनाई गई, और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उन प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना जिससे कि कंपटीशन एलिमिनेट हो सकता है, या फिर सस्टेन करना कंपटीशन को, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। तो काइंड ऑफ ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो कि ओपिनियन देती है स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ को भी। ओके। ओके। तो कंपटीशन एडवोकेसी करना, पब्लिक अवेयरनेस करना, ये सब भी इसके काम है। इवन इंक्वायरी करके ये फिर सज़ा भी अनाउंस कर देते हैं। ठीक है। जैसे भी मेटा के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर ये सज़ा अनाउंस की गई है या फिर पेनल्टी अनाउंस की गई है। तो हुआ क्या, जनवरी 2021 में व्हाट्सएप ने एक न्यू प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो रोल आउट की, जिसमें यूज़र्स को कहा कि 1 महीने का टाइम है आपके पास और आपको ये इसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा और अपडेट करना पड़ेगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस थे, जिसमें कहा गया था कि जो यूज़र डेटा है वो व्हाट्सएप अपने बाकी मेटा प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए यूज़ कर सकता है, और यूज़र का डेटा एडवर्टाइजिंग और बिजनेस रिलेटेड पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। यूज़र्स को कहा गया कि हम आपके प्राइवेट मैसेजेस तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपके जो डेटा है वो एडवर्टाइजिंग और बिजनेस में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। तो उससे ग्लोबल कंट्रोवर्सी हुई, इंडिया में भी हुई, और जो है लीगल चैलेंजेस किए गए व्हाट्सएप के ऊपर कई जगह, कई कंट्रीज़ में। इवन आयरलैंड में भी, यूरोपियन यूनियन में अगर हम देखें तो आयरलैंड ने भी जो है व्हाट्सएप के ऊपर 225 मिलियन जो है वो जीबीपी जो है ब्रिटिश ब्रिटिश पाउंड का जो है वो पेनल्टी लगाया ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स को फेल करने के लिए। ठीक है। तो सीसीआई की जो है उन्होंने 25.4 मिलियन डॉलर का फ़ाइन लगाया है। व्हाट्सएप को कहा है कि आप अगले जो है 5 साल के लिए मेटा के बाकी ऐप्स के साथ जो है डेटा शेयर नहीं कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एसएमई आईपीओस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो आईपीओस निकालते हैं उनसे रिलेटेड, ताकि इन्वेस्टर्स की सेफ्टी का इन्हेंस किया जा सके। तो इससे कंप्लायंस उनकी बढ़ाई जा रही है, रिस्क रिड्यूस किए जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव की जा रही है आपके इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसमें एक मेंशन किया गया है कि मिनिमम साइज़ जो है आईपीओ का वो 10 करोड़ होना चाहिए। अभी तक कोई भी जो है मिनिमम जो है आईपीओ का साइज़ मेंशन ही नहीं था। जो मिनिमम की आईपीओ एप्लीकेशन है वो 4 लाख की होनी चाहिए, करंट जो है वो 1 लाख की है। ठीक है। आपको पता ही होगा कि अगर आप किसी स्मॉल एंड मीडियम जो है एंटरप्राइज के आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो मिनिमम उसका जो है अलॉट साइज़ 1 लाख होता है। अब इसको बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। प्रमोटर जो शेयर्स हैं उनको 20% से ऊपर नहीं रखा गया है। ठीक है। और जो एसएमईज अप्लाई करना चाहते हैं आईपीओ के लिए, उनको मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 3 करोड़ दिखाना होगा पिछले 3 साल में से 2 साल में, जब वो आईपीओ पेपर्स फाइल कर रहे हैं। उनको ऑफर डॉक्यूमेंट्स 21 दिन के लिए लिस्टिंग से पहले रखने पड़ेंगे। कंप्लायंस मॉनिटरिंग एजेंसी बनाई जाएगी जो फंड्स उन्होंने आईपीओ से रिसीव किए हैं, क्या वो उस जगह पर उसको अप्लाई कर रहे हैं जहाँ के लिए उन्होंने फंड्स मांगे हैं। ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्क्लोज करने होंगे। ठीक है। और प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अभी जो है अपनी वैल्यूएशन को इन्फ्लेट करके दिखाया जा रहा था कुछ एसएमईज द्वारा, फंड की मिस यूटिलाइजेशन हो रही थी, इन्वेस्टर को लॉसेज हो रहे थे एसएमई सेगमेंट में। तो एसएमई क्या है, बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल या फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और उनको एनुअल टर्नओवर
और इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट और प्लांट्स के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो जैसे माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, 1 करोड़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की है अगर उन्होंने, और उनकी 5 करोड़ तक की टर्नओवर है, और स्मॉल जो है अगर वो 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ तक है तब वो स्मॉल हैं। अगर उनकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक की है और उनकी टर्नओवर 250 करोड़ तक की है तो वो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, एसएमईज लगभग 30% इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना, 48% इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में उनका कंट्रीब्यूशन है, लगभग 110 मिलियन पीपल को वो एम्प्लॉय भी करते हैं, 63 मिलियन रजिस्टर्ड एसएमईज ऑपरेट भी कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, क्लाउड सीडिंग। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली ग्रैपल कर रहा है सिवियर एयर पोल्यूशन से, तो इसलिए कंसेप्ट जो है क्लाउड सीडिंग का वो एक शॉर्ट टर्म पोल्यूशन को डील करने का जो है वो स्टेप देखा जा रहा है। तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है? बेसिकली आर्टिफिशियल रेन होती है ये, तो एक ये वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जिसमें कि आप रेन करवाते हो ताकि जो है क्लाउड से जो है वो जब रेन गिरेगी तो पोल्यूशन जो है वो उससे ख़त्म हो जाए। तो इसमें होता क्या है कि आप चाहे एयरक्राफ्ट का यूज़ करो, चाहे ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स का यूज़ करो या फिर रॉकेट्स का यूज़ करो, उससे आप जो है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई आइस जो है वो उन क्लाउड्स में जो है वो आप जो है डिस्पर्स करते हो, जिसमें कि मॉइस्चर का कंटेंट काफ़ी है, और आप उसको भारी कर देते हो, फिर उसकी वजह से जो है रेन हो जाती है, ठीक है। तो सूटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चाहिए होती हैं इसके लिए, ऐसा नहीं कि आप प्लेन क्लाउड्स में अगर आप इसको डिस्पर्स कर दोगे तो भी बारिश हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, बिनार स्पेस प्रोग्राम। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली 3 टाइनी ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट्स थी कर्टिन यूनिवर्सिटीज़ के बिनार स्पेस प्रोग्राम की, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बर्न हो गई ड्यू टू सोलर एक्टिविटी। तो बिनार स्पेस प्रोग्राम क्या है? एक सैटेलाइट रिसर्च प्रोग्राम जो कि कर्टिन यूनिवर्सिटी द्वारा ऑपरेट किया गया, और ये सोलर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है इसको भेजा गया था स्पेस में सितंबर 2021 में। और जस्ट 1 साल पहले जब सोलर साइकिल 24-25 स्टार्ट होने वाली थी, ओके, जैसे ही सन जो है हाई गियर में आया, उसने तीन सैटेलाइट्स को जो है एटमॉस्फेयर में ही बर्न कर दिया, और ये एक्सपेक्टेशन से पहले हुआ, ठीक है। तो ये सोलर एक्टिविटी होती क्या है? तो फिनोमिना जैसे कि सन स्पॉट, सोलर फेयर्स और सोलर विंड्स जो हैं वो सोलर एक्टिविटी पर इन्फ्लुएंस होते हैं। तो सन की जो है मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होता रहता है, और लगभग हर 11 साल में ये सन की साइकिल चलती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम्प्लीटली फ्लिप हो जाता है। जब ये 11 साल का मिड पॉइंट आता है तो सोलर एक्टिविटी अपने हाईएस्ट पर होती है। जब हायर सोलर एक्टिविटी होती है तो ज़्यादा फ्लेयर्स आते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सोलर विंड्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हैं सैटेलाइट के वो ख़राब हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जितनी भी सैटेलाइट जो लेस देन 1000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ जो है ऑर्बिट कर रही हैं, उनको सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक ड्रैग देखने को मिलता है। तो सैटेलाइट्स जो इस रीजन में होती हैं वो खासकर जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, स्टारलिंक की हैं जो सैटेलाइट्स, वो इससे अफेक्ट हो जाती हैं, ओके। तो स्पेस वेदर जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है कि मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का जो से बाहर का जो पार्ट है उसमें जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं उसको हम स्पेस वेदर कहते हैं, ठीक है। तो वो एडिशनल चैलेंजेस होते हैं सैटेलाइट या सैटेलाइट ऑपरेटर्स के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज इनाग्रेट की गई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट द्वारा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर न्यू दिल्ली में। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया की साइबर सिक्योरिटी रेजिलियंस को फोर्टिफाई करने के लिए की गई है, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसको कंडक्ट कर रहा है। तो इसमें लगभग 300 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो पार्ट ले रहे हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है। तो इसमें इमर्सिव ट्रेनिंग दी जा रही है साइबर डिफेंस और इंसिडेंट रिस्पांस, लाइव फायर सिमुलेशंस पर, साइबर अटैक्स ऑन आईटी या फिर ओटी सिस्टम्स पर, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स जो हैं गवर्नमेंट और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स उसके ऊपर मिलकर काम कर रहे हैं। तो स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज जो है उसके अंदर सीनियर मैनेजमेंट जो है वो एक नेशनल लेवल साइबर क्राइसिस से डील करना सीख रही है, ओके। फिर एक कॉन्क्लेव किया गया है CSIU का, जिसमें कि तो जिसमें है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो हैं बेसिकली गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के, वो अपने आपस में इनसाइट्स शेयर कर रहे हैं, ओके।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024। ये टॉपिक भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी ने जो है वो एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 अहमदाबाद और पोरबंदर में कंडक्ट की है। एक एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। तो इसको कोनाक कॉप्स जो है सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के, उन्होंने अहमदाबाद और पोरबंदर में कंडक्ट किया है। फोकस रहा है साइक्लोन जो कि कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात में आता है। ओके, तो इसमें मल्टी एजेंसी कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाई जा रही है और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, उसमें ये सब हाईलाइट हो रहे हैं। ओके, 9 फ्रेंडली कंट्रीज़ के भी जो हैं वो ऑफिसर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और एक तरह से ग्लोबल डायलॉग में जो है वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। ये टॉपिक भी आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि यूक्रेन ने यूएस मेड आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो है वो रशिया के ब्रांस्क रीजन में जो है वो लॉन्च किए हैं या फायर किए हैं। तो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम एक कन्वेंशनल सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी वेपन सिस्टम है जो कि स्ट्राइक कर सकता है टारगेट्स वेल बियॉन्ड इट्स रेंज, जो आर्मी कैनन्स, रॉकेट्स या बाकी मिसाइल्स जो है कवर कर सकते हैं। तो इसको लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। पहली बार इसको पर्शियन गल्फ वॉर 1991 में यूज़ किया गया था। तो ये 24/7 ऑल वेदर सरफेस टू सरफेस इनर्शियली गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं जिनकी रेंज अबाउट 305 किलोमीटर होती है। इनको हिमार्स से या एमएलआरएस से जो है वो लॉन्च किया जा सकता है और इसमें क्लस्टर म्यूनिशंस को कैरी करने की भी एबिलिटी होती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है 4 डे ग्लोबल लर्निंग और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रिजल्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी न्यू दिल्ली में। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 1999 में इस्टेब्लिश की गई थी एज इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी ताकि स्पोर्ट्स को डोपिंग फ्री बनाया जा सके। तो ये इक्वल पार्टनरशिप है स्पोर्ट्स मूवमेंट की और गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड की। इसमें डेवलप, हार्मोनाइज और कोऑर्डिनेट करना एंटी डोपिंग रूल्स को, ये वाडा के जो है वो रोल है। तो जब पहली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी डोपिंग इन स्पोर्ट की 1999 में लॉसेन में, स्विट्ज़रलैंड में, तब इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में। ये नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है। लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में इसकी सीट है। हेडक्वार्टर्स इसके मॉन्ट्रियल में है। तो 42 मेंबर जो इसका फाउंडेशन बोर्ड है वो इसकी हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है और जो इसका 16 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो बेसिकली इसकी मैनेजमेंट या फिर रनिंग ऑफ द एजेंसी देखता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Competition Commission of India order on WhatsApp. This topic is important for your governance section. So WhatsApp is planning to appeal the Competition Commission of India's ruling which has imposed $25.4 million fine for anti-competitive practices related to WhatsApp's 2021 privacy policy. So according to this policy, user data was to be shared with Meta-owned apps like Facebook and Instagram for advertising, and it sparked concerns over competition and privacy. Okay, first of all, we need to see what is Competition Commission of India. So it's a statutory body which was established in 2009, and it is meant to eliminate practices which are having adverse impact on competition. It also promotes and sustains competition. It protects the interests of consumers, and it consists of one chairperson and 6 members who shall be appointed by the central government. So this commission is a quasi-judicial body which also gives opinion to the statutory authorities. It is also mandated to undertake competition advocacy, create public awareness, and impart training on competition issues. Okay. Apart from that, it also has role in conducting inquiry into certain kinds of agreements and dominant position of enterprise. So, what was the privacy policy of 2021 of WhatsApp? So in January 2021, WhatsApp rolled out a new privacy policy which had given users time till February 2021 to accept and update. So it introduced significant changes, particularly in sharing user data between WhatsApp and Meta's platforms like Facebook and Instagram. And it also allowed for sharing of user data for advertising and business related purposes. It also
said that we're not going to listen to your private messages, but we're going to share your user data. Okay. So this policy sparked global controversy, particularly in India, over the concerns about undue control over user data. So WhatsApp claimed that it was meant for business user communication, but critics also feared that it would commercialize the personal data of users. So WhatsApp had faced global legal challenges over its 2021 privacy policy. In fact, in European Union, Ireland's data regulator fined WhatsApp to 25 million for failing to meet the transparency requirements. So even India, through CCI, has now fined 25.4 million dollars and directed WhatsApp to stop sharing the user data with Meta-owned apps for advertising purposes for the next 5 years. Okay. So the next topic is uh, SME IPOs. This topic is important for your economy section. So SEBI has proposed new guidelines to make SME IPOs safer for investors. So these changes are aimed to enhance compliance, reduce risks, and improve transparency in the SME IPO segment, which has been seeing increased retail participation in recent years. So now uh, there will be a minimum IPO size of 10 crore rupees, and currently there was no such minimum requirement. In terms of application size, the investor should apply for at least 4 lakh rupees worth of application, IPO application, which currently stands at 1 lakh rupees. So the sale of promoter shares to has been limited to 20%. SMEs must also show a minimum operating profit of at least 3 crore rupees in 2 out of the 3 years prior to filing the IPO papers. IPO offer documents must be made public for at least 21 days before a listing. A compliance monitoring agency will oversee the utilization of funds which have been raised through the IPOs. SMEs must also disclose quarterly results uh, and shareholding patterns similar to large listed companies. Okay, so these measures are being implemented with respect to the concerns regarding inflated valuations, fund misutilization, and investor losses in the SME segment. Okay, so SME basically stands for small and medium enterprises in India, and these are businesses which are categorized as small scale industrial or medium scale industrial units. They are classified based on their annual turnover and their investment in equipment and plants. So with respect to classification, we can see that micro enterprises are those which have investment up to 1 crore rupees and turnover of up to 5 crore rupees. Small enterprises are those which have investment up to 10 crore rupees and turnover up to 50 crore rupees. Medium enterprises are those which have investment up to 50 crore rupees and turnover up to 250 crore rupees. So SMEs contribute approximately 30% to India's GDP. They account for nearly 48% of India's total exports. They provide employment to over 110 million people across urban and rural areas. And uh, over 63 million registered SMEs operate in India. Okay. So the next topic is cloud seeding. This topic is important for our environment section. So recently Delhi is grappling with severe air pollution, and the concept of cloud seeding has emerged as a potential short-term solution to combat the hazardous air quality. So cloud seeding, as you can see, it is basically artificial rain, and it is a weather modification technique which aims to enhance precipitation by introducing substances into clouds so that they can stimulate rainfall. So what happens is that either through aircraft or ground-based generators or even sometimes rockets, you just disperse materials like silver iodide, potassium iodide, or even dry ice into clouds so as to encourage the formation of snow or rain. So cloud seeding is done to increase the radius of the cloud droplets so that they become big, and because of gravity they will come down as rainfall. But it is not as simple as it sounds, because suitable atmospheric conditions are necessary for the technique to be successful, because the clouds should have sufficient moisture. Otherwise, even if the clouds do not have moisture, even if you make them heavy, there would not be ample rainfall, or there would not be any rainfall at all. Okay. So the next topic is Binar Space Program. This topic is important for your science and tech section.
Recently, three tiny Australian satellites from Curtin University's Binar Space Program burned up in Earth's atmosphere due to solar activity. So, Binar Space Program, it's a satellite research program operating out of Curtin University, and the aim is to advance our understanding of the solar system and lower the barrier for operating in space. So, this program began operations with its first satellite in September 2021, and later on, less than a year into solar cycle 25, when solar activity was relatively low, uh, other satellites were launched into space. But when the sun kicked into high gear, three satellites got burned up into the atmosphere much sooner than expected. So this happened due to the solar activity. So what is solar activity? It includes phenomena like sunspots, solar flares, and solar winds. Uh, it is this activity is product of sun's ever-changing magnetic field, which gets completely flipped in 11 years. And at the midpoint of this cycle, solar activity is at its highest. So higher solar activity means that there are more solar flares, stronger solar winds, and they can cause damage or disruption to the electrical components on the satellites. It also means that there is increase in ionizing radiation. Due to that, all satellites which operate in less than 1000 km from Earth experience a significant increase in atmospheric drag. Notable satellites in this region include the International Space Station and even the Starlink constellation. What is space weather? Space weather refers to the environmental effects which originate from outside our atmosphere, okay? And they create additional challenges for satellite and satellite operators. So the next topic is Bharat National Cyber Security Exercise. This topic is important for security section. So Bharat National Cyber Security Exercise was inaugurated recently by the National Security Council Secretariat in collaboration with Rashtriya Raksha University of New Delhi. So this exercise is aimed to fortify India's cybersecurity resilience. It is being conducted by the National Security Council Secretariat and the Rashtriya Raksha University with participation of over 300 government 300 members, which include a diverse spectrum of government agencies, public organizations, and private sector. So this exercise includes immersive training on cyber defense and incident response, live fire simulations on cyber attacks, and collaborative platforms for government and industry stakeholders. So a strategic decision making exercise will bring together senior management from several sectors to simulate decision making in a national level cyber crisis. There is also a Chief Information Security Officers Conclave, which features these officers from government, public, and private sectors sharing insights about their experiences. Okay, so the next topic is Exercise Sanyukt Vimochan 2024. This topic is important for your security section. Recently, Indian Army has successfully conducted the exercise Sanyukt Vimochan 2024 at Ahmedabad and Porbandar. It's a multilateral annual joint humanitarian assistance and disaster relief exercise. And this exercise is being conducted by Kunak Corps of Southern Command of Indian Army, and it is being conducted at Ahmedabad and Porbandar. So this exercise focused on cyclone in the coastal region of Gujarat, and it is also aimed at addressing gaps in interagency integration and cooperation as well. So it saw a multi-agency capability demonstration through the collaborative efforts of Indian Army, Indian Navy, Air Force, and Coast Guard. Okay, even 15 senior officials and representatives from 9 friendly foreign countries participated in it. Okay, so the next topic is Army Tactical Missile System. This topic is important for your security section. So Russia's defense ministry has said that Ukraine has fired six US-made Army tactical missile systems at Russia's Bryansk region. So this Army tactical missile system is a conventional surface-to-surface artillery weapon system, which is capable of striking targets well beyond the range of existing army cannons, rockets, and other missiles. It is manufactured by Lockheed Martin. This missile system saw its first use during the 1991 Persian Gulf War. So these are 24/7 all-weather surface-to-surface inertially guided ballistic missiles. They have a range of about 305 kilometers. These missiles can be fired from HIMARS or MLRS platforms. They also have the ability to carry cluster munitions. Okay.
So the next topic is World Anti-Doping Agency. This topic is important for your social issues. So India will host a 4-day global learning and development framework results management training in collaboration with WADA in New Delhi. So WADA was established in 1999 as an international independent agency uh, to uh, ensure doping-free sport. So it is an equal partnership between the sport movement and the governments of the world. The primary role of WADA is to develop, harmonize, and coordinate anti-doping rules. So its formation can be traced back to the first World Conference on Doping in Sport in 1999 in the in Switzerland, so, in Lausanne, where the Lausanne Declaration on Doping in Sport was adopted. And this led to the establishment of WADA in Lausanne in 1999, which is a not for profit foundation. And its seat is located in Lausanne, that is in Switzerland, and its headquarters is in Montreal, that is in Canada. Okay. So its governance structure can be seen through the 42-member foundation board, which is the highest policy making body of this agency, and there is also a 16-member executive committee, which which basically oversees the management and running of this agency. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.